Bismillahirrahmanirrahim. This is our week 5th lecture. In our last lecture, we have studied a different mathematical model to solve the algorithm problems. We have studied mathematical induction, also a strong mathematical induction. In today's lecture, we will discuss another model, for example, a recursive model to solve the recursive model is used to solve the problem which is very difficult. So, and complex. So, we will use a recursive model, but in recursive model there are some features, because a problem can be broken down into sub problems that find a way to solve these sub problems, then built up to a solution to entire problem. This is the idea behind recursion. In recursive algorithm, we can break down problem into pieces which you either already know the answer or can be solved. Apply the same algorithm to each piece and finally combine the result of these sub problem to find the final solution. More concisely, a recursive function is defined in terms of itself. Basically, a recursion is a computer algorithm that calls itself in a step having a termination condition. The successive repetition are processed up to the critical step where the condition is met. In recursive algorithm, each repetition is processed from the last one call to the first. Recursion is a wonderful technique for dealing with many problems where problem and sub problem having same mechanism to solve. But before discussing the example, we have to know about the merits and demerits of recursion. Recursion methods are much easier to conceive of and code than their iterative counterpart. Every problem is not solvable using the approach, the recursive approach. But what kind of problem are solved with the recursion? Generally, the problem which are defined in term of themselves are usually good candidate for recursive technique. Here we will discuss the example, the factorial of any number. If you know that this is the factorial number is a good example for recursive mathematical model. If you look like the 5 factorial is equal to 5 into 4 factorial, and you know that the 4 factorial is equal to 3 into 3 factorial, and 3 factorial is equal to basically 3 into 2 factorial. So, this is a recursive model just like this, that the function of f n is equal to n into f of n minus 1. But we can assume first that the 0 factorial is equal to 1. So, that the f of 0 is equal to 1 and solve till termination. You can see here the general equation of this model, f of n is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 or into 2 into 1 and the loss f of 0. If we will solve the
n factorial. So, our equation becomes f of n is equal to 1 if condition is n is equal to 0. Otherwise, if 2 factorial, 1 factorial, 3 factorial, 6 factorial, 9 factorial, 100 factorial, this means f of n is equal to n into f of n minus. This is the recursive, but we can use here the alternative of recursive technique to solve the problem. If we see here, the neglect certain technical detail to solve the recursive problem. Assume integer argument to functions, because running time t of n is always defined when n is an integer. This is the assumption in solving recursive relation. Consequently, for convenience, we shall omit statement of boundary condition for recursiveness and assume that t of n is constant for small n. Recursiveness for worst case time of merge sort, we know that t of n is equal to theta 1 if n is equal to 1, otherwise t of n by 2 plus t of n by 2 plus theta of n. हमने यहाँ पे देखा है कि बेसिकली टी ऑफ एन क्या है कि ये हमारा वो रनिंग टाइम है जो कि किसी भी हमारी जो प्रॉब्लम का साइज है उस पर डिपेंड कर रहा है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटीजर से, कि हमारा प्रॉब्लम का साइज कितना है, जितना उसका साइज होगा उसके मुताबिक उसका रनिंग टाइम होगा। तो ये रिकर्सिव में हमने देखा कि अगर हमारे पास एन है तो वो जितनी उसकी टर्म्स बन रही है, क्योंकि हमने रिकर्सिवली सॉल्व करना है, तो जो भी उसकी जितनी टर्म बनेगी उसको एन ऑफ मीन के उसको ज़ीरो तक लेके जाएंगे, जो सॉल्व करेंगे वो बेसिकली बताएगा कि हमारा टोटल जो रनिंग टाइम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कितना रहा। इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड अल्टरनेट मेथड है रिकर्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नाउ वी सी हियर एग्जांपल अबाउट दिस। Substitution method basically has two steps. Number one, guess the form of the solution, कि solution की form को हम guess करते हैं, फिर use mathematical induction to find constant and show that the solution does work. अब जो सब्स्टिट्यूशन जो उसका नाम है बेसिकली वो इसी से है कि फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन ऑफ गेस्ड आंसर फॉर द फंक्शन व्हेन द इंडक्टिव hypothesis is applied to smaller value. The method is powerful, but it can applied only in cases when it is easy to guess the form of the answer. The substitution method can be used to establish either upper or lower bound on a recurrence, mean we want to the boundary of the time, mean upper or lower boundary of the running time. So we'll use this substitution method. और हमने ये देखा है कि सिर्फ वहाँ ये यूज़ हो सकता है, यहाँ पे हम कुछ इन आंसर की कुछ फॉर्म गैस भी कर सकते हो। फिर हम इस फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल एग्जांपल is log AB into log of B of C is equal to log A of C. तो प्रूफ में हमने देखा यहाँ पे कि log A of B is equal to S अगर हम लें और log B of C अगर हम is equal to T लें, और हमने सपोज किया तो A of S equal to B होता है, तो नो और B of T is equal to C अगर हो तो हम यहाँ पे B of T is equal to C में वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि B इज इक्वल टू ए ऑफ एस है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ए पावर एस टी बनेगा तो ये इक्वल टू सी होगा, और इस पे अगर हम लॉग अप्लाई कर देते हैं तो लॉग ए ऑफ सी जो होगा एस इंटू टी होगा, और वी नो दैट कि एस इज लॉग ऑफ ए बी है और लॉग टी जो है लॉग ऑफ बी सी है। तो ये प्रूव हो गया, ये एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। हमने इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन की वैल्यू पुट की तो हम
उससे इस नतीजे पे पहुँचे, यानी सब्स्टिट्यूशन की, तो हम उसका प्रूफ और रिज़ल्ट निकालेंगे। और यहाँ पे ये एग्जांपल आप खुद लीजिएगा। इसकी एक और एग्जांपल है कि अगर हमने इस वैल्यू को हमने रिकर्शन मेथड से भी सॉल्व इस टाइप की किया है एग्जांपल को। यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि जो हमारा साइज़ है मकसद n है, और उस पर जो रनिंग टाइम होगा वो 1 होगा अगर n की वैल्यू 1 होगी, यानी हम उस वैल्यू को एक ही दफ़ा सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर हमारी ये टी ऑफ n इज टू उसके अलावा कोई भी हो, तो जो हमारा टाइम 3 इंटू टी ऑफ n/4 प्लस n होगा। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारी पहली इक्वेशन हम जानते हैं कि टी ऑफ n इज इक्वल टू 3 इंटू टी n/4 प्लस n है। तो हम फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो हमारा जो सोल्यूशन है उसमें n/4 है, तो हम इसलिए n को n/4 से अगर रिप्लेस करते हैं तो हमारा t ऑफ n/4 इज इक्वल टू 3 इंटू टी n/4 स्क्वायर प्लस n/4 बनेगा। ये हमारी फॉर एग्जांपल एक दूसरी इक्वेशन। वो नेक्स्ट वैल्यू में 3f³ बन जाएगा, फिर 3 बन जाएगा। अगर इस तरीके से ये 3f(k) तक हम जाए तो t/4k प्लस 3/4k माइनस 1n प्लस 3/4k माइनस 2, यानी इस तरीके से 3/4 0 तक हम ये जाएंगे n तक। और अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा n जो है इक्वल टू 4 ऑफ k है, आसानी के लिए इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये हमारा 3 ऑफ k इंटू टी ऑफ n/n प्लस मीन, ये इक्वेशन आप देख सकते हैं, इंटू n प्लस 1 प्लस 3/4 प्लस 3/4 स्क्वायर प्लस 3/4 क्यूब प्लस 3/4 4, इस तरीके से ये चलता जाएगा, 3/4k माइनस 1 तक जाएगा। और ये जो हमारी इक्वेशन है ये इक्वल टू 1 प्लस मीन x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस मीन अप टू x माइनस 1, तो ये होता है 1 इंटू 1 माइनस एक्स के बाय 1 माइनस एक्स होता है। अगर इसको हम रिप्लेस करें इस फार्मूले को, तो ये हमारा बन जाता है 3f(k) इंटू टी ऑफ 1 प्लस n, और 1 इंटू 1 माइनस 3/4k बाय 1 माइनस 3/4। तो टी ऑफ 1 क्योंकि 1 के इक्वल है, हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3f(k) इंटू 1 प्लस 4n माइनस 3f(k) बाय बनेगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 3f(k) प्लस 4 ऑफ n 1 माइनस 3f(k), और हमने वापस 4 ऑफ k की बजाय n को पुट कर दिया यहाँ पे। तो ये हमारी वैल्यू जो बनेगी 3f(k) प्लस 4 ऑफ n n माइनस 3f(k) ओवर n से यहाँ पे आपके सामने है। अगर ये कट जाए तो ये 3f(k) प्लस 4 इंटू n माइनस 3f(k) बनेगा। और अगर हम इसको सॉल्व करें मीन 3f(k) प्लस 4 ऑफ n माइनस 4 इंटू 3f(k) बनेगा। और इन दो वैल्यू में 3f(k) को कॉमन लें तो ये हमारे में 4n माइनस 3 इंटू 3k बनेगा। और 4n माइनस 3 इंटू 3k की बजाय अगर हम इसकी वैल्यू, क्योंकि 4k इक्वल टू n होता है, तो हमारे पास k की वैल्यू जो बनेगी log 4 ऑफ n बनेगा। इसको इसकी बजाय पुट करें तो ये हमारा बन जाएगा 4n माइनस 3 इंटू n log 4 ऑफ 3। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है बेसिकली, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, अगर हम इसको 3 इंटू एन ऑफ अल्फ़ा ले लेते हैं और अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 0 लेस एन इक्वल अल्फ़ा, अल्फ़ा लेस एन इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि n ऑफ अल्फ़ा है। तो ये चीज़ हमें ये बता रही है कि टी एफ एन जो है बेसिकली ये यहाँ पे मकसद उसकी वैल्यू जो है लोअर मकसद पाउंड से ये बिलोंग कर रहे, तो बिलोंग टू थीटा n है। तो ये तो हम चलते हैं कि बेसिकली जो असिम्प्टोटिक हमारी नोटेशन होती है कि हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को से किसी एल्गोरिदम की इसको काउंट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, तो
बेसिकली ये जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होता है किसी भी मैथमेटिकल जो हम अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उनको, तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि उसको मैयर हम करते हैं बेसिकली नंबर वन के कितना टाइम लगा। अभी हमने देखा कि जितना हमारा प्रॉब्लम जितना उसका साइज़ होगा जिस पे वो डिपेंड करेगा कि उसके लिए हमें कितना टाइम, मकसद कम्प्लेक्सिटी है उसको अपर या लोअर, मकसद बाउंड हम देखेंगे कि मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है, या हमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स या अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। मीन ये है कि कंप्यूटेशनल हमारी कम्प्लेक्सिटी कितनी है, और मेमोरी के लिए मकसद कितनी स्पेस रिक्वायर्ड होती है। जैसे हमने रिकर्शन मेथड को पढ़ा तो उसके लिए हमें स्टैक रिक्वायर्ड होता है, और हर अगले जो उसका स्टेप होता है उसके लिए फिर फर्दर एक स्टैक रिक्वायर्ड होता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए वो स्पेस की कम्प्लेक्सिटी है कि हमें कितनी स्पेस रिक्वायर्ड होती है। तो इसका मकसद है हम इन तीन चीज़ों को देखते हैं कि टाइम कम्प्लेक्सिटी, कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को, जब भी हम किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसकी कम्प्लेक्सिटी करने के लिए। तो यहाँ पे है जो मेजर हमारा फैक्टर होता है एल्गोरिदम की डिज़ाइन में उसकी करेक्टनेस होता है कि जब हम किसी को उसको अगर इनपुट देते हैं तो वो जो है करेक्ट आंसर पे, आउटपुट पे अगर वो हॉल्ट होता है इसका मकसद है कि वो हमारा करेक्ट है। और अगर वो इनकरेक्ट एल्गोरिदम है तो इसका मकसद है, ज़ाहिर बात है, वो करेक्ट आंसर पे हॉल्ट नहीं करेगा, और वो जब भी हॉल्ट करेगा वो करेक्ट आंसर के अलावा मीन किसी और अनडिज़ायर वैल्यू पे हॉल्ट करेगा। तो जो करेक्ट एल्गोरिदम होता है उसको हम सॉल्व करते हैं उसके कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को कि कंप्यूट करते हैं। अब है एल्गोरिदम की एफिशिएंसी क्या होती है, यानी इससे बड़ा सिंपल है कि पहले तो ये है कि वो आउटपुट दे रहा हो, वो करेक्ट हो, फिर वो हमें उसको एल्गोरिदम कंसीडर करते हैं और उसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, और अदरवाइज ज़रूरत ही नहीं है जब वो आंसर ही गलत दे रहा हो। तो दूसरा हमारा है एल्गोरिदम की एफिशिएंसी। तो हम उसकी एफिशिएंसी को मेजर करते हैं कि उसके एनालिसिस करते हैं, मीन के उसके ग्रोथ रेट के कंपेयर करते हैं एफिशिएंसीज डिफरेंट एल्गोरिदम की, और फिर देखते हैं कि इसमें ऑप्टिमिस्टिक एल्गोरिदम कौन सी बेटर है। अब है कि जो ग्रोथ रेट निकाला जाता है वो बेसिकली एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को ही मेजर करता है कि अब एफिशिएंसी से मुराद वही है जो हमने पहले भी देखा कि उसके रनिंग टाइम कितना होगा, यानी कि बाउंड का लोअर बाउंड या अपर बाउंड क्या रनिंग टाइम उसका हमें रिक्वायर्ड होगा। तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे हमारे पास में तीन टाइप के सिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं कि रनिंग टाइम जो है जो जो भी उसका इनपुट साइज़ है, रनिंग टाइम इंक्रीजेज विद इनपुट साइज। जैसे इनपुट साइज बढ़ता जाएगा रनिंग टाइम भी ज़ाहिर बात है उसका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ओ मीन बिग ओ है हमारे पास, ओमेगा और थीटा, ये तीन बेसिकली टाइप्स हैं असिम्प्टोटिक नोटेशन की, जिससे हम उसकी रनिंग टाइम को बेसिकली मेजर करते हैं कि उसका अपर बाउंड मैक्सिमम या लोअर बाउंड या अपर और लोअर बाउंड को हम यहाँ पे देखते हैं और उसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वो कहता है कि दीज नोटेशन डिफाइन इन टर्म ऑफ फंक्शन हुज डोमेन आर नेचुरल नंबर्स, उनकी डोमेन नेचुरल नंबर होते हैं। कन्वीनियंट फॉर वर्स्ट केस रनिंग टाइम, हम फाइंड आउट वर्स्ट केस रनिंग टाइम को भी करते हैं, एवरेज को भी करते हैं, बेस्ट को भी करते हैं।